Bismillahirrahmanirrahim. We are still discussing the module number 7, that is dimensioning and tolerancing. In module 7-2 we will cover a topic, tolerance. At the end of this lecture you would be able to understand the concepts and purpose of tolerance and limits, understand the concepts of fits and related terminology like nominal size, basis size, allowance, clearance, interference, etc. Then you will be able to differentiate between three general types of fits: clearance, transition, and interference, and their application. Then you will be able to apply some concepts of tolerance and limits to the designing of a fits, and also understand the difference and use of basic hole and basic shaft system. And finally design different types of fits using ANSI B4.1 recommendations. Understanding the tolerance. As you see in the figure right hand side, specifying the tolerance is essential to ensuring that interchangeable parts fit together in assemblies. Tolerance overview. Interchangeable manufacturing requires effective size control by the designer because in mass production all parts must be fit together properly regardless of where they are made. For example, an automobile manufacturer might subcontract some parts of manufacturing to other companies. Both parts for new automobile and replacement parts for the repairs. So all parts must be enough alike that each can fit properly in any assembly. So we can define a tolerance as the maximum acceptable amount that an actual part feature can vary from a specified dimension is known as the tolerance. जो हम parts बनाते हैं they can be very precise in dimension, even to a few million of an inch or thousands of an millimeters as in gauge below, but highly accurate parts are extremely expensive to produce, and there is a still more variation, some variation between the z dimension and the actual size of the part. So fortunately, perfectly exact size are not needed. So the necessary needed in a part depends on its function. तो जो accuracy है, जो necessity है किसी भी part की requirement की, वो उसके function के ऊपर depend करती है. And product with small variation in shape may fit together more precisely and command high prices. तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर टॉलरेंसेस की वेरिएशन बहुत कम है, डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में बनाया जाएगा, तो उस सूरत में उसकी कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी. So however, it is not be practical for all products to be manufactured to high precision. और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स को हाई प्रिसीजन के ऊपर बनाएं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मैन्युफैक्चर है जो कि चिल्ड्रन ट्राईसाइकिल्स को बनाता है. अगर उसके अंदर हाई प्रिसीजन हो रही जस्ट लाइक अ जेट इंजन एक्यूरेसी, तो कोई भी उसको पे नहीं करेगा, मतलब कोई भी विलिंग नहीं है कि उसको वो बाय करे. तो डेफिनेटली उसका बिजनेस जो है वो आउट हो जाएगा, वो बिजनेस से आउट हो जाएगा मैन्युफैक्चर. तो टॉलरेंस जो है बेसिकली उनकी हाई प्रिसीजन डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि उसकी प्रिसीजन आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, मॉडरेट चाहिए एंड सो ऑन. So tolerance you can say is an extension of dimension. Like it allows you to specify a range of accuracy for the shape, size and position of every feature of the product so that the manufactured parts will fit together and function properly when assembled. तो tolerance क्या है? Basically ये dimension की एक extension है कि ये आपको एक large range of accuracy देती है आपकी shape की, size की, position की, for every feature of your product.
so that the manufactured parts, जो आप parts manufacture करेंगे वो easily fit हो सके और वो proper functioning कर सके during their assembly. So to effectively produce tolerance in your drawing and CAD model, you must have to follow or keep in mind these following guidelines, like understand the fit requirements between the mating parts. जो parts को आपने join करना है उनके दरमियान फिट्स की क्या requirement होनी चाहिए, इसको आपने बहुत important है कि वो आप उसे understand करें. Then you have a clear picture of how inspection measurements are performed. आपको clearly होना चाहिए कि जो inspection होगी आपके प्रोडक्ट की वो किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी. Then you will be able to apply the tolerance symbol to a drawing और मॉडल, और आपको टॉलरेंसेस के जो सिंबल्स हैं अपनी ड्राइंग और मॉडल के ऊपर अप्लाई करना आने चाहिए. और अप्लाई द फंक्शनल टॉलरेंसेस टू इंडिविजुअल पार्ट फीचर, और जो इंडिविजुअल पार्ट के फीचर है उसके ऊपर फंक्शनल टॉलरेंसेस के फीचर्स को अप्लाई करना आना चाहिए. तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके इल्म में होने चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट की टॉलरेंसेस कर सकें और उनको आप मैन्युफैक्चर कर सकें. So just a recap, tolerance is the total amount a specified dimension is permitted to vary. तो tolerance एक ऐसी amount है, एक total amount है जो आपकी dimension के अंदर variation को allow करती है, as I discussed before. So tolerances are specified so that any two mating parts will fit together. हम tolerance को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कोई से दो parts जिनको आपने join करना है वो easily fit हो सके आपस में. So keep the part cost low or specifying a tolerance as large as possible that still permits satisfactory function of the part. तो ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है कि जो आप पार्ट बनाएं एक तो उसकी कॉस्ट कम हो और जो उसकी टॉलरेंस की स्पेसिफिकेशन है वो इस हद तक पॉसिबल होनी चाहिए कि जो उस पार्ट का फंक्शन है वो उसको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर सके. So tolerance can be stated several different ways on a drawing. आप tolerance को बहुत सारे तरीकों से आप अपनी ड्राइंग के ऊपर शो कर सकते हैं. So, एक मेथड उसके अंदर स्पेसिफाई करने का है प्लस और माइनस रेंज की सूरत में. और ये जो मेरे पास 3D मॉडल है यहाँ पे मेरे पास एक शाफ्ट है और एक स्लॉट है जिसने इसके साथ मेड होना है, फिट होना है. तो जो बाइलेटरल टॉलरेंस है इसको हम फिगर के अंदर किस तरीके से शो कर सकते हैं, जो प्लस एंड माइनस आप कह रहे हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे बाइलेटरल टॉलरेंस की एक फिगर दिखाई गई है. यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पे उसका जो आपके डाया है इस सिलेंडर का और उसकी जो वेरिएशन है उसकी टॉलरेंस की वो दिखाई जा रही है बाय यूजिंग द बाइलेटरल टॉलरेंस. So a dimension gives 1.625 plus minus 0.002 means that the manufactured part may be 1.627 or 1.623. Mean if you sum 0.002 in 1.625 then you come up with this value. And when you minus this term into this term then you come up with this value or anywhere between these maximum or minimum limit dimensions as shown in the figure B. तो जो हमारे इस प्रोडक्ट का डायामीटर है वो इस रेंज के अंदर किसी भी वैल्यू के ऊपर मैन्युफैक्चर हो सकता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा. अगर वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा तो वो हमारा प्रोडक्ट आउट हो जाएगा. So the tolerance, the total amount of actual part feature is allowed to vary from what is specified, that is 0.004. ये मेरे पास टॉलरेंस है जिसके अंदर वेरिएशन जो है टोटल मेरे पास रेंज की जो वेरिएशन है जो अलोएबल है वो 0.004 है. इंटरचेंजेबिलिटी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजेबिलिटी का. बेसिकली इसका एडवांटेज ये है, वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ टॉलरेंस इज दैट दे अलो फॉर इंटरचेंजेबल पार्ट्स, कि आप पार्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. ये इसका मेजर एडवांटेज है टॉलरेंस का क्योंकि ये आपको इंडिविजुअल पार्ट की डिस्प्लेसमेंट जो परमिशन है मतलब कि वो इजीली परमिट करता है रादर देन रिप्लेस द इंटायर सिस्टम इफ वन पार्ट गोज बैड. अगर कोई एक पार्ट खराब हो गया तो सिवाय उसको चेंज करने के साथ साथ पूरा सिस्टम आप चेंज करें, आप सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करें बाय यूजिंग द इंटरचेंजेबिलिटी. फॉर एग्जांपल इफ बेरिंग वियर आउट, अगर किसी प्रोडक्ट का बेरिंग वियर आउट हो गया है
तो मुझे सिर्फ रिप्लेस करना पड़ेगा बेरिंग, रादर देन कि मैं कंप्लीट वर्ड सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करूं। लेकिन इन लेट 1800 क्या होता था, यू कुड नॉट बाय अ थ्रेडेड बोल्ट बाय इटसेल्फ। आप बोल्ट को खुद बाय नहीं करते, यू हैव टू बाय अ मैच सेट ऑफ बोल्ट एंड नट बिकॉज दे वर हैंड फिटेड टुगेदर। तो प्रीवियस और 1800 सेंचुरीज के अंदर जो प्रोडक्ट आपके बनते थे वो हैंड मेड होते थे। अगर आपका बोल्ट खराब हो गया है तो आपको नट का सेट भी साथ में लेना पड़ेगा, सेपरेट आप उसको बाय नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो हैंडमेड बने हुए हैं। सो ऑल बोर्ड्स एंड नेट्स वर मेड इन अ सेट एंड नॉट इवन द मशीनिस्ट हु मेड देम कुल टेल यू द एक्चुअल साइज ऑफ द थ्रेड। और जो मशीनिस्ट उसको बना रहा है वो भी आपको उसका एक्चुअल साइज नहीं बता सकता थ्रेड का। So, inability to define the threads using dimensioning made interchangeable parts impossible. इस वजह से आपके parts की interchangeability impossible थी in 1800s century. But now in early days of industrial revolution, all parts were handmade and the hand assembled. Each part of an assembly was adjusted, polished, cut, and shaped to fit perfectly with its mating parts. Like a wooden wheel is a good example. The sports hubs and rim were cut to fit one wheel. The steel hoops was hand fitted to the wheel and then heated and forced onto the rim. तो क्या किया जाता था, जो स्टील का हुप था उसे हैंड फिट के थ्रू बना के उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर व्हील को फिक्स किया जाता है बाय अप्लाइंग सम हीटेड, और जब वो कोल्ड होगा तो कोल्ड होने के दौरान वो श्रिंक होगा, मतलब ड्यूरिंग कूलिंग उसके अंदर श्रिंकेज होगी और वो स्क्वीज हो जाएगा असेंबली के दौरान। तो दिस वाज द प्रेसिजन असेंबली बट इट रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल माइनिंग एंड virtually no communication because one person made the whole assembly. In fact, the wagon smith made the entire wagon. In today manufacturing world, a company would make the hub, another would make the spokes, and another would make the rim. But the solution lies in dimensioning and tolerances to make sure that the parts will fit together even though they are made by the different companies. तो आज के इस दौर के अंदर डिफरेंट वेंडर्स हैं आपकी कंपनी के, मतलब एक आपको हब बना के दे रहा है, एक आपको जो है रिम बना के दे रहा है, एक आपको स्पोर्ट्स बना के दे रहा है। लेकिन वो जब आप किसी एक असेंबल प्लान के ऊपर उनकी असेंबली करेंगे तो वो सब आपस में इजीली असेंबल हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसी कॉन्सेप्ट, जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल से देखते हैं आज। टॉलरेंसीज को डायमेंशनिंग की डिटेल जो है वो प्रीवियस लेक्चर 7-1 के अंदर हमने कवर कर ली थी। सो इट्स एन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव टू टेक अ बॉल पेन that has a removable tab and remove the tab. So the cap is not too difficult to remove, yet it is tight enough to stay on itself by itself. तो कैप जो है आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो इजीली उसके साथ फिट रहेगा। So cap represent the interchangeable parts. Another cap like it will fit just as well. अगर आप कोई और कैप लेते हैं तो आप इजीली इसके अंदर फिट कर सकते हैं। So now imagine you have a small business and you are making these tab by hand. अगर आप इन tabs को hand से बनाना शुरू कर देंगे और आपके पास एक small business है, then if you had all of the pen on hand, you could polish the entire of each tab until it fit just the right. तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर टैब को पॉलिश करना पड़ेगा इनसाइड, ताकि वो प्रॉपरली फिट हो सके आपके पेन के साथ। So this is exactly how manufacturing was done around 100 years ago. So each part was hand fitted to its mating part. तो हर एक पार्ट को हाथ से बनाया जाता था और फिर उनको मेट किया जाता था, आपस में ज्वाइन किया जाता था, असम्बल किया जाता था। और प्रॉब्लम क्या आती थी हैंडमेड सिस्टम के अंदर, वो कुछ इस तरह से है कि दे आरंट इनफ स्किल मशीनरीज अवेलेबल। जो स्किल लेवल है वो आपका इनफ है, मतलब कि आरंट इनफ, बड़ा मशीनिस्ट के लिए जो अवेलेबल स्किल लेवल है वो ना होने के बराबर है। और you can only get 3 pennies each for the cap. They would cost of $5 in the labor. And no employee would do the work for more than a week. It would be very boring. So the pen may not be available because an other company in an other state might make them. So these are the some problem
related to the handmade system. So, food for thought. How is a feature on an interchangeable part be dimension? हम इंटरचेंजेबल पार्ट को डिमेंशन कैसे कर सकते हैं उसके फीचर को? आई एम श्योर यू कम अप विद वेरी वेल आंसर. So the answer is the feature is not dimension using a single value but a range of value. आप क्या करेंगे, आप फीचर को rather than सिंगल वैल्यू से डिमेंशन करें, आप उसको एक रेंज ऑफ वैल्यू के साथ मेंशन करेंगे लाइक दिस. ये आपके पास एक डिमेंशन है जिसकी आपने रेंज यहाँ पे बताई है. So a tolerance is the amount of size variation permitted. So you can choose a tolerance that specify a large or small variation. So the lower and upper allowable sizes are referred to as the limit dimension, and the tolerance is the difference between the limits. So this is the size of limit that is equal to 1.005 to 0.994. This is the upper limit, mean the largest value. This is the lowest limit, mean the smallest value. And the tolerance is equal to 1.005 minus 0.994 is equal to 0.011. Again, food for thought. Why do you want a part size to be controlled by two limits? हम किसी part को दो limits के दरमियान control क्यों करना चाहते हैं? Just because of its necessity, because it's impossible to manufacture part without some variation, as we discussed earlier in this lecture. So the stated limits are a form of quality control. So choosing the correct tolerance for a particular application depends on the design intent and use of the part, cost, how it is manufactured, and the experience. Tolerance is standards. So standards are needed to make it possible to manufacture parts at different time and different places that still assemble properly. So each established dimensional limits for parts that are to be interchangeable. So the most common standard agencies are American National Standard Institute ANSI or ASME or the International Standard Organization ISO.